Start with the great name of Allah, who is King of the Kings, who is Rahman and Rahim, who is most gracious and most beneficent. Hi all friends, especially Sir Imran. Assalamu alaikum. Friends, you know that today our topic given to us, that are we going away from books? According to my point of view, yes, we are going away from books. Nowadays, we are not reading the books. Especially we are not reading the history of our religion, we are not reading the history of our country, we are not reading the history of our nation, our tribe. We should read these things. These are necessary things, these are basic things. We have to know about these things. These things we can get from books, okay? So if we are going away from books, how we can get these things? So we should read the books, okay? And book is that thing which can make us able to fly in sky, which book can, okay, make us able to choose our good way of our life, and it can show us difference the good and bad way of our life. And if it carries us, like I mentioned, it carries us from earth to sky, it carries us. And it can, okay, help us to defeat, okay, to okay to defeat it can help us to face any situation of our life. It helps us. So unfortunately nowadays we are not, okay, reading books. We are going away from books. Just we are, okay, mostly nowadays our young generation, they are, okay, wasting, we are wasting our times using mobiles, especially social media. Even nowadays we see that in colleges, universities, okay, when a teacher gives us a lecture, we don't write the lecture. Just at the end of the lecture we take a picture from whiteboard. So it is not necessary nowadays, okay, with books, as well as our writing skill is going backward because of we are not writing. Just as I mentioned, that we are taking pictures and we are, okay, not writing that lecture, and we are preparing ourselves from pictures. Okay students, so nowadays mostly we are thinking that we are reading to pass the exam. Just at the end of year we, okay, work hard just to pass ourselves for, okay, make ourselves for exam, make ourselves good for exam. It is not, okay, done. We should read the history of religion. We should know the good and bad way of our life, which these kind of things we can get from books. So I want to say my all friends who are listening me and watching me, that try to read books, try to read the history of your religion, try to read the history of your country, try to read the history of your nations. Inshallah you will get benefit from books, and books will make you able to fly in sky, to, okay, face situation, any situation of your life. Inshallah, if you read the book will help you in any part of life. So that were my points I mentioned with you, and I hope alhamdulillah you like these points. So with this point, I enough my topic, I end my topic. Okay, assalamu alaikum. हाय, दिस इज़ मोहम्मद शुएब अख्तर स्पीकिंग फ्रॉम बकर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे तमाम दोस्तों और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद इमरान शाह साहब को मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है, क्या हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो ये बात 100% सच है कि आज हम सब किताबों से दूर होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसकी वजह आज की जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसने आकर हम सब लोगों को स्वस्थ बना दिया है। अगर हमें कोई चीज़ सर्च ढूंढनी हो तो हम उस चीज़ को किताबों में तलाश करने के बजाय नेट पर, गूगल पर सर्च कर लेते हैं और अपना टाइम बचाते हैं, जो कि जिसकी वजह से हम स्वस्थ हो गए। मेरे दोस्तों, पहले लोग किताबें पढ़ने को एक मुश्किल समझते थे, मगर अब हम इसे फजूल समझते हैं। मेरे दोस्तों, इसकी वजह एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिसकी वजह से हम सारा दिन उसी में मगन रहते हैं और किताबों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। शायद इसी वजह से हमारे अंदर किरदार कुशी की बीमारी जन्म पाती जा रही है। मेरे दोस्तों, किताबें हमारे आबा व अजदाद का एक अजीम विरसा है, जो कि हमें मुफ्त में मिली हैं। मेरे दोस्तों, अगर हमें ये पता चल जाए कि एक किताब को लिखने में कितना टाइम लगता है, या एक किताब को जो सोचता है, जो मुसव्विर, जो राइटर, तो उससे कितना वक्त दरकार होता है, तो शायद हम इस बात की कदर नहीं कर सकते। हम लोग आज किताबें पढ़ना फजूल बात समझते हैं और इसकी वजह से हमारे अंदर किरदार कुशी की बीमारी जन्म पाती जा रही है। मेरे दोस्तों, किताबें पढ़ना एक मुफीद मशगला है।
اور اس مشغلے سے ہمیں بہت ساری معلومات فراہم ہوتی ہے، چاہے ہمیں وہ ہسٹری کی کتابیں ہوں یا جنرل نالج کی۔ اس کی وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ہسٹری کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح زندگی گزاری، ان کا رہنے کا طرز و زندگی کیا تھا۔ مگر آج کے اس دور میں ہم اس مفید مشغلے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سست اور کاہل ہیں، اور شاید اگر اسی طرح ہم اپنی کتابوں سے دور ہو گئے تو آگے آنے والی نسلیں شاید ہمارا نام و نشان ان تک باقی نہیں رہے گا، ورنہ الحفیظ الایمان۔